Hello, dear students. Welcome to your science lesson. And today we are going to start our chapter number 15th of your science book, that is Water, the life giving liquid. Okay. So, students, just tell me, can you imagine your life without water? No, we cannot imagine our life without water because our whole life is totally depend upon water. है ना? बिकॉज सुबह से लेकर शाम तक आप जितने भी काम करते हैं यू यूज द वाटर. सो वाटर इज असेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. ओके. एंड 70% of our body is made up of water. This thing you very well know. And about 97% of water present on earth is ocean water. Okay. जो हमारी बॉडी है उसका तो 70% जो पोर्शन है वो किससे बना है? वाटर से. बट अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अबाउट 97% ऑफ द वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज ओशियन वाटर. 97% वाटर अर्थ का पार्ट है तो वाटर का, बट है वो क्या? ओशियन वाटर है. एंड 3%, 35 इज रिटन ओवर हेयर बाय मिस्टेक, यहाँ है 3% इज फ्रेश वाटर. तो 97% में से बाकी सारा का सारा कितना है? ओशियन वाटर है, जो कि क्या है? सोल्टी है, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर द ड्रिंकिंग. तो ओनली 3% वाटर है, वो क्या है? फ्रेश वाटर. गेटिंग? नेक्स्ट देखो, तो अगर अब हम उस 3% की बात करते हैं तो उस 3% में से भी जो 70% फ्रेश वाटर है उसमें से जो 2% है दैट इज फ्रोजन इन ग्लेशियर्स एंड आइस कैप. सो नाउ about 29% of fresh water, that is 0.6, is locked deep into the ground. Okay. And only 0.3, that is 0.009% only, that is available in the form of the river and lakes. आएगी बात समझ में? सो दैट्स वाई जो हमारे लिए सुटेबल है ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए दैट इज ओनली 0.009%. ओके. दैट्स मेक वाटर इज वेरी precious. Okay. So that's why we conserve water for our future and we should not waste our water. Although 70% of earth is covered with the water, but still we have only 0.009% is available in the form of river and lakes. Getting? So our next topic is sources of water, that is from where we get the water. Number first is rainwater. So students, the main source of water is rain. Okay. So rainfall occurs when the water vapor in the air condense. जब water vapor एयर में कंडेंस हो जाते हैं, जब वो हैवी हो जाते हैं, जब वो क्लाउड बन जाते हैं तो क्या होती है? रेनफॉल होती है. ठीक है. वाइल फॉलिंग डाउन इन दी एटमोसफेयर, तो जब वो हैवी बन जाएंगे, क्लाउड बन जाएंगे, देन व्हाट विल हैपन? दे विल फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ द रेन. ओके. सो आफ्टर दैट इट गेट मिक्सड विद द इम्प्योरिटीज एंड डस्ट पार्टिकल्स. ठीक है. सो उसके बाद क्या होते हैं? ये जब हमारे पास रेन वाटर आता है तो क्या होता है? बट ये रेन वाटर वैसे तो प्योर है, बट हमारे तक पहुंचने में क्या होता है? दे आर जनरली मिक्सड विद द इम्प्योरिटीज एंड dust particles. Getting? But rainwater is considered as the purest form of water. Okay. So this is one of the very important source of the water, that is rainwater. Next source of water is groundwater. So students, during rainfall, a part of the rainfall water is collected in the ground. ओके. वाटर क्या होता है? ग्राउंड में कलेक्ट हो जाता है एंड इट फॉर्म्स द ग्राउंड वाटर. सो नाउ देयर आर डिफरेंट लेयर्स इन द सैंड. सो एज वाटर passes through the different layer of the sands and rock, it gets naturally filtered. क्या होता है? ये naturally filtered हो जाता है and it is free from the suspended impurities. Getting? Now, approximately 30% of the total fresh water found on the earth exist as the groundwater,
and we can obtain the groundwater, you know very well, as you can see from the picture also. We can obtain the groundwater by digging wells and through the tube wells. Okay, so groundwater is also a source to obtain the water. Next is surface water. surface water कौन सा होता है? So water present on the surface of earth, ठीक है, in the form of the oceans, lakes, ponds and river, these are called the surface water. ठीक है, the water in the rivers and lakes comes from the rain and snow melt. Now what are the sources that कि river और oceans में पानी कैसे पहुंचता है, water कैसे पहुंचता है? सो जो वाटर होता है इन रिवर्स एंड लेक्स कम्स फ्रॉम द रेन, या तो फिर रेन से पहुंचता है, अदरवाइज फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ द स्नो और मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स. ठीक है, सो इन दिस वे दे आर नोन एज द surface water. That the water in present in the oceans, river and lakes, these are known as the surface water. So the next source of water is ice cap and glaciers. You can see from the picture, these are the glaciers. ग्लेशियर्स क्या होते हैं? बर्फ होती है ना जो आइस के पहाड़ सम. ओके, these are known as the glaciers. So about 70% of the earth fresh water is locked in the glaciers and these polar caps. Okay, and with high temperature they start melting and falling in rivers and lakes. So now next source of water is ocean water. Now almost all the rivers eventually flow into the oceans. Getting? So thus river water is a source of the water for the oceans. Okay, river water is a source of the water for the oceans. जैसे ice cap and glaciers are the source of water for rivers ना, similarly river water is a source of water for the oceans. And although ocean water makes up nearly 97% of the entire water present on the earth, still it is not viable source of potable water. Okay, because it contains salt and other impurities and it is not fit for the drinking purpose. Okay, and sea water is considered to the most impure form of the natural water. Okay, next is, so now we have discussed all the sources of water, that is rainwater, groundwater, surface water, ice cap and glaciers, as well as ocean water. Now there are some uses of water also. So how you use the water? So for drinking purpose you use the water, for agriculture, ठीक है, water is used for transportation also. जैसे जो ships होती हैं, so they travel via the water ना, so this is a mode of transportation. ठीक है, next in the industry also there is a use of the water. Okay, so apart from these sources there are some many other sources that are, so apart from these uses there are many important other uses of water. These are, so water is used in the digestion, respiration as well as excretion. Okay, that is secretion of the waste product from the body, so water is necessary for that. Okay, second is, it is also help in absorbing and transporting the nutrients and oxygen to the various parts of the plants, isn't? Next, water is also used in for the germination of seed and for the process of photosynthesis also there is a requirement of the water. Okay, next is, water is also necessary for the habitat of some plants and animals, है ना. So water क्या होता है? Natural habitat है ना, जैसे lotus plant का एक habitat क्या है? Water, है ना. Chestnut, hydrilla, these all are survive in the water and it is also necessary for the animals such as the fishes, dolphins, whales, isn't? So and next, water is also used in the dams. Okay, water is used in dams for generating the electricity and such electricity is known as the hydroelectricity. Getting? Okay, next, water is also used for the sports such as swimming, river rafting, है ना. Other uses are, it is also used for the fire extinguisher, है ना, that you know very well. And
water is known as the universal solvent. क्यों कहा जाता है? That we have discussed in the earlier chapter also, that because it dissolves more substances than any other liquid. Okay, it is capable of dissolving many substances as comparison to the other liquids. So these all are the uses of the water. So now proceed to our next topic. Now our next topic is states of matter. So we all know that water exists in three states, that is solid, liquid and gas. So let's start from the solid. Suppose आपके पास ice है, that is in the form of the solid. So if you want to convert the solid into liquid, then what you will do? Solid को liquid में change करना, this process is known as the melting. Okay, so melting of ice will be liquid. So आप क्या करेंगे? या तो उसको heat करेंगे, otherwise you will keep that ice in the at the room temperature. So that will known as the melting. Now next is liquid into gas. So how you will convert the liquid into gas? That is by the process of the evaporation. These all processes we have read, है ना? So जब हम liquid को heat करेंगे, that will change into the gas, and by the this process is known as the evaporation. And also you know that we obtain the salt from the sea water by the process of the evaporation, है ना? Next is now we want to change the gas directly into solid. तो अब गैस को डायरेक्ट चेंज करना सॉलिड में विदाउट चेंजेस इनटू लिक्विड, दैट इज नोन एज द डिपोजिशन. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन या फिर सोलिडिफिकेशन. ओके, सो दिस इज नोन एज. नेक्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द सॉलिड अगेन. अब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं. सो इफ वी वांट टू कन्वर्ट सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द सब्लिमेशन. So converting of this solid into gas directly without converting into liquid, that is known as the sublimation. So example of the sublimation process is there at your homes. You use the naphthalene bowls, है ना? और naphthalene bowls होती हैं जो वो क्या हैं? सॉलिड्स होती हैं, बट उनसे क्या एक गैस मतलब वेपर्स क्रिएट होते हैं, गैस क्रिएट्स होती है. आपको स्मेल देखते हैं आप, सॉलिड को किस में कन्वर्ट होता है? वो गैस में कन्वर्ट होती है विदाउट चेंजेस इनटू द लिक्विड. नेक्स्ट, अब गैस को लिक्विड में चेंज करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज द कंडेंसेशन. ओके, द प्रोसेस बाय विच गैस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड. ओके, सो वाटर वेपर्स को जब कूल हो जाते हैं ये एट अ पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन. नाउ नेक्स्ट इज फ्रीजिंग. अब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, सो वी विल कन्वर्ट द लिक्विड इनटू सॉलिड बाय द फ्रीजिंग, है ना? सो दीज ऑल आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड दीज वर द various processes by which you can convert the substance into one form to the other form, that you can change the state of any substance. So with this we have completed our part first of chapter water. Okay, so do the track your progress carefully and assessment zone related to these topics, and we will meet in our next video. Till then, take care and bye bye.